जनाब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हैं आप? वालेकुम नौसन, आप सुनाइए। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुसैन, आप हमारे साथ ओमान गए थे और ओमान को आपने एक्सप्लोर किया था डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के सेटअप को भी देखने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि आप जब गए थे तो जाने से पहले आपका क्या परसेप्शन था ओमान के बारे में, और फिर जब वहां पहुंचे तो वो परसेप्शन पे कैसे चेंज हुआ, या बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अच्छा, so before I go there, background, because this will be a comparative statement, right? Oman को आपने कैसा पाया? So then it's important to state के what against what it is being compared to, right? मेरा जो travel है वो यूरोप में भी रहा है, टर्की में भी है, वेस्ट इंडीज में भी है। गल्फ तो ट्रैवल नहीं है, वेरी ब्रीफ विजिट इन दुबई, एंड हज के लिए मैं सऊदीया गया था। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि फोकस्ड नॉन टूरिस्ट ट्रिप्स है, तो इट्स डायरेक्ट कंपैरिजन शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज आई वाजंट लुकिंग एट बोथ ऑफ दोस प्लेसेस फ्रॉम अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव। ओके, just to present it कि जी ओमान का कैसा लगा। So ओमान ट्रिप था, उसको I'll break it into two। एक तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुकुम है, and then जो मस्कत है, ठीक है। तो I mean if you have any preference we can start with that, or नो कंटिन्यू, आप जो बेहतर लगे वहां से आप स्टार्ट कीजिए जी। So and generally जो दूसरी स्टेटमेंट है when presenting a comparative analysis इसके जी जो स्पीकर है उसकी तबीयत कैसी, तो generally I'm a bit pessimistic, full of ओके ओके। हुसैन, हमने क्या आपको लूज कर दिया? नहीं, म्यूट किया, come back। So generally bit pessimistic, तो शायद वो चीज भी आपको कंसिडर करनी होगी when analyzing what I say from a दुकुम perspective, ठीक है। To me it seemed कि जो future is still away, of course। With this statement you also need to analyze कि of course I'm not someone who's into strategy, कि at something I can quickly understand कि हाँ यार it's close by, right? person जिसका इतना नहीं है vision उस on the scale of years, so this is my statement, it's the future is away। That said, it is very important to note कि जो दुकुम की development है, it is very much on ground and it is real, ठीक है। It's not कि उसका future में ही है, right? There was one major growth spurt जिसकी वजह से दुकुम really stood out, development भी सब कुछ हुआ, and then once that session ended तो फिर everything sort of diminished, ठीक। And this is very visually present to you when you go there, you realize कि यार there's been a lot of construction, but the people aren't there, ठीक है। Of course this isn't to say कि जी वो बस उन्होंने future की तैयारी में construction कर ली, it is there was a definitive need who construction use we, and that need no longer was relevant, तो फिर exit। या आप ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। जो लगी है। So this is what I wanted to say कि when you go there you visually see कि everything is available, and it's not कि जी वो एक सुनहरा ख्वाब था और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसे फंस गए, it's not that, it's कि was a definite need, वो need खत्म होगी तो फिर population कम होगी। So this is sort of opening statement जो कि analysis जो मैं गया था वहाँ पे था, this for the future, right? When you talk about the quality of construction, of course, your GCC and generally everywhere in that region, so it there isn't a lot that you can complain about. Okay, तो काम अच्छा नहीं है, right? It's not that,
उनके जो घर हैं वो अगर इवन इफ यू टॉक अबाउट स्टूडियोज वो फशादा ही होता है। सो इट्स नॉट कि जी यू फील वेरी क्रैम्प के यहाँ पे अगर पाकिस्तान में इवन इफ यू हैव अ थ्री रूम प्लस गोइंग डाइनिंग जो है स्पेशियस अपार्टमेंट है तो यू स्टिल फील क्रैम्प। ठीक है, वो जस्ट द वे दे कंस्ट्रक्ट के जी नहीं ये तो 3 बेडरूम है राइट, उसके अंदर सब कुछ ही डाल देंगे, वो चाहे वुड हैव बीन फिट फॉर मे बी 2 रूम अपार्टमेंट उसको 4 रूम बना देंगे ना। तो नोट के जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है एंड एवरीथिंग एल्स इज गुड टू गो। और जो हाइट्स थी वो भी काफी ऊंची थी, है ना, जो रूफ की हाइट्स थी जो हमने देखी वो भी काफी ऊंची ऊंची हाइट्स थी। उन्होंने वो कोई छोटे छोटे डब्बे नहीं बनाए हुए, एटलीस्ट जिस डेवलपर के पास वो जो कंस्ट्रक्शन थी वो व्हेन यू टॉक अबाउट जो डेवलपर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो साइड मेजर डेवलपर्स हैं तो फिर वो वही 1 स्टोरी 2 स्टोरी थी एंड ऑफ कोर्स ये जो 1 स्टोरी 2 स्टोरी थी आई वुडंट से कि बिल्कुल मेन ऑफ द मेन रोड थी बट इट वाज स्पॉटेड थ्रू दुकम, बट ऑफ कोर्स दैट्स डेवलपमेंट पार्ट के as you know the need arises तो फिर वो जो ग्रोथ है वो इसी तरह से होती है कि when you जो 1-2 stories है they are demolished और फिर वो डेवलपर लेके they make the high rise apartments। तो जहाँ स्क्वायर था तो obviously was it looked जब हम गए थे तो वहाँ पे it was evident that the construction was ongoing। हम संडे को गए थे या आई थिंक सैटरडे को गए थे तो उस वक्त आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? ये मेसन स्क्वायर। मेसन स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, मेसन स्क्वायर जब हम गए तो थे, हम जिस टाइम पे भी गए थे तो उस वक्त वो बाय लॉ छुट्टी थी, जी जी ब्रेक जी, तो वो वहाँ पे हमें डायरेक्ट भी लेबर से एक्सेस नहीं था बट वी वर शोन अराउंड और वहाँ से भी आई मीन इट वाज वेरी इजी टू पिक के जो the underlying concept of a spacious house existed और कुशादा रूम्स नजर आ रहे थे तो that's a given। उसके साथ amenities भी उसी के करीब ही थी, it's not के fully जंगल में वहाँ में नहीं था, so that's all there। उसके से दूर there was a huge complex I believe that was government or something। रेनेसेंस विलेज है, वो गवर्नमेंट की ने अकोमोडेशन दी है ओवरऑल कि वहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग वहाँ पे रह सकते हैं, तो सस्ती अकोमोडेशन भी है और एक्सपेंसिव वाली भी है, दोनों ही है, और बहुत बड़ा उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, बिल्कुल रेनेसेंस विलेज के नाम से। It was a standalone basically project जहाँ पे सारी amenities available थी। So this is my observation। बाकी of course it's supposed to be an industrial city। So we also looked at the master plan जो सिजात में था and a very well thought of plan कि कहाँ क्या चीज़ कहाँ बननी है। There was spaces allocated for the fisheries, there was for the space part, airport तो obviously function था ही वहाँ पे, जो उसके लाइट और हेवी इंडस्ट्रीज के जोन्स भी allocated थे, कमर्शियल जोन्स भी allocated थे। yes, third है हाँ ये वाला। so all of this was very well planned। जो ये है कि when you talk to the officials so they're pretty straightforward about it कि जो the ability to develop a place of course is not directly under anyone's control। ठीक है, वो मार्केट के अंदर है, it's not कि जी गवर्नमेंट क्लेम कर देगी जी ये 2020-30 के अंदर this will be a you know industrial city you know at par with any other in China or you know Europe even because a lot of जो geopolitical चीजें हैं उससे ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। And even if like companies want to invest in everything, but they are also, you know, hindered by that। But of political side, जो इनका tourist spot है, I think that was Sohar या Salalah। नहीं, that was Salalah। Salalah Salalah is pretty
good to know. वहाँ पे हम नहीं जा सके, but that's right next to the border of Yemen, and that's the reason I'm bringing this up now is because the geopolitical stability जो थी Oman की, that has always been one of the cornerstones of their diplomatic policy. So it's not that Oman will directly be sort of impacted by or is expected to be impacted by geopolitical upheavals. Jitna maybe even something जो UAE है, इतना active है in Yemen and Saudi है, so all of that. Oman को Switzerland of the Middle East भी कहते हैं because of the way they have handled themselves in last 50 years, and I will say the peace broker in terms of relationship, not in terms of greenery. No. In terms of maybe diplomacy. Diplomacy, obviously. और ये बड़ी interesting बात है ओमान की, क्योंकि बाकी जो पूरा रीजन है उसमें कोई ना कोई मसले खड़े हुए हैं, बट ओमान इज द ओनली कंट्री जो कि एक्ट एज अ पीस ब्रोकर. इनकी रिलेशनशिप्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी हैं. यूएस की इन्वेस्टमेंट भी हुई है, यूके की भी हुई है, ईरान की भी हुई है, सऊदी अरेबिया की भी हुई है, तो आई थिंक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 out of 10 है ओमान के. So coming back to the trip, मैंने comparative वो दे दिया कि what am I comparing against, generally जो मेरा view of life है वो भी बता दिया. And then we talked about duqm के अंदर when someone goes there, so there is a visual lack of economic activity and a lot of infrastructure readily available, a lot maybe as compared to the actual on-ground people, it would be a lot, but not as compared to something like Dubai. So statement दे दिया, that's not because कि वो oversold हुआ है, that's primarily because there was a growth, a need जिसको fulfill, and that need is no longer there. तो वो sort of diminish हो गया उसका visual economic activity. But duqm of course has a very nice coastline as well, which is we didn't touch. It's not necessarily an industrial town. Of course, it can also be a very good getaway retreat to the beach there. If you compare, maybe if you're expecting about greenery here, so that's not what Oman is. So that is something that is a given. There's nothing that can be changed. Baki, it's well planned, and the statements from the officials are grounded on reality. The fanciful nahi hai कि जी हाँ everything is hunky dory nahi hai. It's a it is out there, and then you need to take your decision, which is how I like it कि जी on ground जो चीज़ हो उसी के ऊपर decision लिया जाता है instead of marketing statements पे. So that's the summary about our discussion. The geopolitical हमने discuss कर लिया कि duqm has a high chance of success because geopolitically जो है Oman is pretty much neutral in the true sense and not in the other sense so commonly used of that. And so moving to Muscat. Muscat of course is the capital of Oman. Muscat के अंदर जो उनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आउटस्कर्ट्स के अंदर वो डेवलपर्स ने अगेन जो as expected development है in the Gulf region, at least from my point of view, वो that was there. और price point भी attractive है. And of course, the challenge for all of it is how does Oman position itself to be the next top tourist destination? That is the core question here. If you're going to invest in the outskirts of Oman, everything of course well planned hai. And what does the on-ground footfall look like to be?
इसका अभी तक मेरे पास नहीं है। How to present itself, right? अभी पिछले 4 सालों के अंदर तकरीबन 2,27,000 लोग ऐड हुए हैं ओमान के अंदर। तो ओमान as residents, एज रेजिडेंट तकरीबन हाँ 2,27,000, और ये 50 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फास्टेस्ट ग्रोथ है ओमान की पिछले 3 सालों के अंदर। सो वो नंबर्स एफडीआई भी इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, इस साल आई थिंक 8.2% इंक्रीज हुआ है इनका एफडीआई भी। और तीसरी अच्छी बात यह है कि जो लोन लिया था इन्होंने, अराउंड 70% लोन टू जीडीपी रेशियो था 2020 के अंदर, वो गिर के 33% पर आ गया। तो ओमान मतलब बहुत सारी चीजें साथ कर रहा है, क्योंकि जैसे हम तो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं लोन, क्योंकि हमने वापस थोड़ी करना होता है तो लेके बैठ जाते हैं लोन को, लेकिन ओमान इज नॉट कंफर्टेबल विद द लोन एट ऑल। और पिछले 3 सालों से वो लगे रहे हैं कि जीडीपी टू लोन रेशियो कम करो, क्योंकि अगर कम नहीं करोगे तो हमें जो पैसे और चाहिए ना, क्रेडिबिलिटी हमारी नहीं इंप्रूव होगी अगर आप पैसा टाइम पे वापस नहीं करोगे। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि जीडीपी टू लोन रेशियो तकरीबन 33% पे लेकर आ गए, हाफ कर दिया पिछले 3 सालों के अंदर। तो क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है इनकी। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से मतलब ये है कि अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओमान में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ओमान जो है वो एटलीस्ट पेमेंट के मामले में बहुत सीरियस है। ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं इस जगह के अपने, बट जो एटलीस्ट डायरेक्शन है वो बड़ी उन्होंने बता दिया। वो 2040 का जो विजन है वो भी मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग विजन है उनका। ओमान 2040 जो विजन डॉक्यूमेंट है ना, कोई इम्प्लीमेंटेशन की फॉलो अप यूनिट भी बना हुआ है, पूरी वेबसाइट डेडिकेट की हुई और काफी वोकल है कि हमारा है क्या, किन किन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे बड़ा फोकस है। तो आई थिंक ओमान के लिए बड़ा मतलब जो भी ओमान को एक्सप्लोर कर रहा है उसको 2040 विजन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको समझे बगैर आप फिर ओमान को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि ये बेसिकली ब्लूप्रिंट है जो नई सुल्तान हेतम जो है वो इस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं, फर्स्ट करें आप मास्टर हैं सस्टेनेबिलिटी के, या मास्टर हैं आप गवर्नेंस के या प्लानिंग के, या इन तरह किसी के मास्टर हैं, तो वो बड़ा आइडियल टाइम है मस्कट ओमान में होने का, क्योंकि इनका इस वक्त फोकस ही इन सारी चीजों के ऊपर है। तो उसमें ये भी है ना कि I mean, we're not really deciding the future of Oman here, right? And उसमें कोई हमारी billion dollar investment तो है नहीं. We're talking about a very limited sort of investment in terms of real estate. And of course, when you talk about real estate, the option comes with you, why not Dubai, why not the Gulf, जहाँ पे right? Context में बात की जाए तो people really इतना strategically नहीं देखते कि क्या करना है. They always see कि यार country stable है, investment stable है, will it materialize, or quality of delivery and everything. तो वो एक अगर उस पर हम discussion करें तो सबसे बड़ा advantage ओमान का तो यही आता है कि the price point is ideal. To get the facilities जो कि expected for, let's say, a place like Dubai है और सब कुछ है, a fraction of the cost. ठीक है. So not only that, you also get the residency, and residency in Oman means के access to the entire Gulf market. Absolutely. जहाँ पे आपके पास I think 2 million है शायद UAE की. So this is like very very cheap, truly of what there is. And yeah, in a case, so if you're even looking to take it not even as कि जी हम सिर्फ इसको real estate के अंदर जाएंगे, हम ये भी देख रहे हैं कि we'll expand or consider Gulf as our second home in terms of, तो फिर आपके पास full access आ जाता है. You can simply drive और आपके पास immediately आपको visa, if I recall correctly, आपको it's an e-visa. Yes, ऐसा ही है. कर सकते हैं. So that's a huge advantage, right? So from a real estate, आपके पास price point is significant. You're getting almost the same delivery. Now comes okay, but मैं real estate ले रहा हूँ for
rapid circulation कि जी मैं खरीदूं बेचूं ठीक है, that's something जो कि शायद ओमान में is not expected, not for now. उसकी प्राइम वजह यही है कि ओमान still needs to be that place कि जी when you say कि जी let's go for a vacation, so a quick vacation, your weekend getaway, maybe it's not Oman that pops up, it's Dubai. Dubai access is very, very easy, and that's they made it that people come and and then go back. So that is something that is to be considered. Oman mega real estate ले रहे हैं for increasing your wealth. So that's something I was questioning. In terms of rapid buying and selling, in terms of maybe long-term growth, if the trajectory that Sultan Qaboos and Oman has had for this past couple of decades, अगर वही रहती है तो फिर there's no doubt कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा potential है, ठीक है, and reason to not believe it will continue, क्योंकि they have sort of set up themselves very, very good. Initially, जो इनके थे जो economic and everything, यानी कि as a player in the world, once it was an empire, then it fell on hard times. Now it's still back on its feet and establishing itself, or pretty much in certain areas established, but not really there in terms of when you talk about, let's say, of course, its neighbor, Dubai. So that is my understanding from a real estate perspective. It may be a slower market as compared to Dubai. If you're looking for a long-term strategy, then Oman makes a lot of sense. That will help everything. It will open the entire Gulf region for you in terms of business, in terms of stability. So वो फिर question ये आता है, if you're looking at from a Pakistan perspective, so when you invest in Pakistan, what is it that you see? Pakistan is strip of developers, but for the same, you can get everything else and a huge lot more in a month. Right? That's the sort of, if you're looking to buy, let's say कि मैं Beria के अंदर plot लेके घर बनाता हूँ, ठीक है, but that you can get your entry into the entire Gulf region, and that's the key thing that I have sort of I feel is very important, that needs to be stated. अगर मैंने पाकिस्तान में invest किए हैं, उसी amount में I could have invested and gotten everything, access to the entire Gulf region, and with the stability of the country. पाकिस्तान में तो कुछ नहीं पता है कि जी okay, developer अच्छा चल रहा है, and they fall out with the government, and then उसके बुरे दिन आ जाते हैं. और यहाँ पे तो खैर और भी जो philosophy to real estate है, that's completely different, right? और वो अब चेंज हो गई है ना हुसैन. आई थिंक ये जो अभी पीछे 2-3 सालों में हुआ है, उसने आपको बता दिया है कि वो जो पीछे चलता रहा था सिलसिला, कहते हैं ना फाइलें मोटी हो रही हैं, अब वो पतली हो रही हैं, तो वो आई थिंक चेंज आ गया. वो वाली रियल एस्टेट नहीं रही है जो पहले होती थी, क्योंकि अब इनके पास पैसे हैं ही नहीं यूज करने के लिए. तो वो सब तो इशू रहता ही है कि जी यहाँ पे झूठ जो है वो टॉप प्रायोरिटी होता है. इट्स ट्रू कि यहाँ पे सिर्फ दे सेल ड्रीम्स, तो वो ड्रीम्स आर ओनली ड्रीम्स अंटिल यू वेक अप. बिल्कुल वहाँ पे आपको रियलिटी सेल करते हैं, ड्रीम्स कम सेल करते हैं. अच्छा, ये बताइए कि वहाँ के लोग कैसे लगे, आपका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे लोगों के साथ, खासकर ओमानियों के साथ, वो कैसे एक्सपीरियंस था आपका? So, of course, expats dominated country, and so you do expect to meet a lot of expats in Oman. बाकी जो officials हैं या जो ओमानी हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, and what I found them to be was that even with zero sort of presence on the horizon, they were kind enough to entertain all sorts of questions and
उसमें मुझे कोई वो नहीं था कि I didn't feel कि वो they didn't look down upon people. They were there to assist, and to assist भी was in the truer sense of word कि आपको proper on ground reality factually बता रहे हैं this is what it is. So then you can your mind, and of course you can when you have that kind of attitude towards business to it, you can really ask the tough questions. वो tough का भी आपको एक standard यानी proper well thought of जवाब होता है कि you can ask them कि अच्छा दुकुम के अंदर जो है it's still far away, right? So would you consider something like the payment plan that Dubai has कि जी आपका post handover they have a continued payment plan. So this was a difficult question, right? From a developer perspective, push him towards something that was probably out of his domain. तो भाई एक plan है, हम कितना exam आपको extend कर सकते हैं, but we can't really change the core philosophy of the plan कि जी post handover ही आपने payment करनी है, which is on Dubai. So that was ठीक है कि जी it's a very small investment, it's not huge. So and fact के जो पाकिस्तान especially होता है कि जी वो they sell something that they don't have, and they take the money and buy it and then sell it to you. Oman they actually own, and then जो है वो they're selling, right? So एक वो चीजें भी थी. So from a perspective of people, so apart from meeting from expats जो के local Omanis से, they were down to earth and friendly, and they answered all the questions that were asked of them, fitting their stature. Right. कि वो घुमा फिरा के नई बात कर रहे थे. बहुत सारे तो बहुत नाइव थे, वो भी बड़ा नजर आया, बहुत मासूम से और बहुत ही कभी कभी तो हैरानगी होती है कि अच्छा लोग इतने मासूम भी हो सकते हैं. एनीवे, अच्छा ये बताइए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा मस्कत का, कैसे कंपेयर करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप? इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर मस्कत का खास तौर पे. So Muscat ka infrastructure, of course, it was very, very good. हमारा जहाँ stay था, I did travel a couple of localities. तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो शायद उतना नहीं किया जितना इरादा था. Peak season में. But it was good enough in the sense कि I mean as compared to back home तो बहुत बेहतर था. As compared to Dubai, वहाँ पे मेरा इतना travel नहीं है कि मैं इसको proper comparative करूँ. In terms of जो Saudi Arabia है, वहाँ से भी again it was pretty much like any other Gulf city. Right. Airport अच्छा लगा आपको उनका? Airport. Oh, true. But airport. देखिए कितना बड़ा लहीम शहीम एयरपोर्ट बनाया हुआ है. पहले बहुत ही छोटा सा था, बस स्टेशन लगता था, लेकिन अब इतना लहीम शहीम एयरपोर्ट जो 2018 में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है. और ऑब्वियसली मेरा इसमें कमेंट यही है कि I'm not a fan of airports. So you're not a fan of it. अच्छा. इसमें यही कि you get in, you get out, and that's the plan. जबरदस्त. ठीक. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको वहां पे ओमान के अंदर खवातीन नजर आई होंगी, ओमानी खवातीन, राइट? एक्सपर्ट तो थी, तो वो आपको कल्चर कैसा लगा वहां पे कि वो खवातीन जो थी वो अबायों में थी या बगैर अबायों की थी? मतलब जो इस्लामिक एक एंगल है आपको वो वहां नजर आ रहा था ओमान के अंदर? To be honest, मेरा उसमें स्टेटमेंट थोड़ा न्यूट्रल ही है. I would say कि जी वो दुबई है in terms of freedom. I wouldn't Saudi Arabia in terms of restriction. I would say a healthy part of both. का क्या plan है, that of course I cannot comment from a very short trip, but it is कि it's a
it's a good balance between the two. गुड बैलेंस है, राइट राइट। आपका मस्जिदों में भी जाना हुआ वहां पे, और काफी जगहों पे जाना मस्जिदों के अंदर, वो किस तरह से आपको लगा कि वहां पे वो मस्जिदों का जो कल्चर है वो कैसे आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ? क्या फर्क लगा आपको के जो as compared to Pakistan, of course, there is no comparison. पाकिस्तानी मसाजिद तो बस वो कब्जे पे जमीन पे बना देते हैं लोग, unfortunately. So they were proper mosques, well constructed, and सब कुछ था. So of course there's no comparison in terms of that. ये है in terms of जो acceptance of जो discrimination अगर शायद word है, वो of course मैंने personally पाकिस्तान में इतना नोट नहीं किया, but I may be the odd man out. एक दफा ही हुआ है, ओमान में of course इतना ज़्यादा नहीं था, तो again I wouldn't say कि जी वहाँ पे भी exist नहीं करता है, but generally and of course we were very visible tourist over there, वो भी factor आ जाता है. So again this question is something जो कि इतने short trip के ऊपर can't be stated, but of course हाँ, लेकिन कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना कि जो आपको लगे ये क्या हुआ भाई? Again what can be stated is कि जी what is the perception or what is this news at stake, right? Smith, of course everything is good to go except for that one incident जो इस साल ही हुआ है, but other than that हाँ बिल्कुल. अच्छा, हाँ, मस्जिदों के मामले में ऑब्वियसली काफी मशहूर भी है ओमान. अराउंड कुछ 16,000 मॉस्क हैं, और ये सुल्तान तस्वीर मैंने जब शेयर की हुई सुल्तान कबूस की मॉस्क की है, और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, मस्कत के अंदर मौजूद है ये. और ये क्योंकि इबादीज हैं तो इस वजह से वो जो एक डायरेक्शन की तरफ जो इनका झुकाव है वो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये भी एक है आई थिंक पॉइंट ओमान का कि ना ये शियाज हैं ना ये सुन्नीज हैं, ये इबादीज हैं. तो ये किसी एक जो कहते हैं ना डॉक्ट्रिन जिसकी वजह बेसिस पे पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है, वो किसी एक के पीछे नहीं है. तो उसकी वजह से भी काफी एडवांटेज है इस जगह को कि यहाँ पे टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, ना सिर्फ सेक्ट्स का भी बल्कि आई थिंक डिफरेंट रिलीजन्स का भी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे नेपालीज भी हैं, बंगालीज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियंस बहुत हैं यहाँ पे. तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने भी कभी आज तक नहीं सुना, मुझे भी 12 साल हो गए ओमान के अंदर, कि हमने कुछ तरह की बातें कभी सुनी हो वहां पे. तो चलें, जबरदस्त. अच्छा, आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्वियसली आप डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन अगर 2-3 स्टेटमेंट दे दें कि ओमान को अगर देखें तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और ओमान की जो ओवरऑल चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपने वहां पे? As compared to Pakistan, it's a very easy decision. Right. So if you have the funds and you're looking to invest in Pakistan, my own country, in Oman, then it's a very easy decision that you can very simply state कि जी पाकिस्तान का जो है वो इतना there's absolutely no comparison in fact. No comparison, no guarantee कि जी आपके जो funds हैं वो people talk कि जी रियल एस्टेट में बड़ा प्रॉफिट है और वो कभी नीचे नहीं गिरता. All of those are factually incorrect because if something that मेरा personal experience है कि you buy something at X price, ठीक है, and in what maybe half a decade जो है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी 50% बढ़ जाती है. At the same time, the currency is devalued 50%. Inflation, बढ़ जाती है, तो फिर वो there's really no increase in value. Don't expect that in at least Oman. ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट वहाँ कर लें तो पाकिस्तान से तो this will really increase a lot, right? So that's a very easy decision to make. That's part one. Right. In terms of inflation and everything. दूसरा price point, it's not as if कि जी आपका it'll charge you like it's not an impossible thing to do, right?
if you have funds, यहाँ पे भी elite जो areas हैं, तो वो तो फिर if you can buy something in maybe defense or even in the area town, so you can easily buy something in Oman, right? There's no question. If you talk about the lower segment or middle class, जो कि कह रहे हैं कि okay, I have a payment plan for maybe 4 years, तो ठीक है, अब they will be slightly stretched, but they're still doable. Especially if they have sort of at least one iteration already done in Pakistan, तो फिर वो उसी को ही reinvest कर सकते हैं. So that's an easy another part. The difficult part is how to sort of move the funds abroad. Okay, उसके लिए I don't have an answer, but of course where there's a will, there's a way. So this and जो कि आप बेहतर आंसर कर सकते हैं कि किस तरह से मूवमेंट हो सकती है. यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट टच किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और विलिंग भी हैं, बट वो सिर्फ इस चीज पे स्टक हुए हुए हैं कि वो मूव कैसे करें फंड्स को. तो Pakistan has a very healthy and very strong established channels to do this. So क्या कर सकते हैं, and I don't see it as any negative way, because it's your आपके हलाल की कमाई है. You should be able to do what you want to do. Absolutely. के पैसे हैं जी, अब वो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका. So I question in its entirety. तो वो तो है. So this is as compared to Pakistan. I see no reason why anyone would want to invest in Pakistan if they if they are able to sort of do a quick comparison or even visit Oman and understand कि क्या वहाँ पे opportunities exist करती हैं. So I wouldn't say anyone जो कि slightly है जिसके पास funds वो करे. अब इसमें there's a significant chunk in Pakistan जो कि freelancers हैं, who are earning in dollars, right? So possibly the prime market for this investment, right? If they are earning outside and they have new wealth, so they don't know how to handle that wealth. And of course Pakistan में पैसे लाके फिर वो taxation का जो है वो सारे question mark आ जाते हैं. So they're looking for options. So this is a very option for them कि जी आप divert कर लें. And मेरा जो personal एक है कि जी बैंक के अंदर पैसे होके interest नहीं भी ले रहे आप, तो you're still being part of that system जो कि आपका interest को enable कर रही है. So that's of course very sort of binary approach to that, and I understand you won't have that, but I do. Like वही आता है कि if you have money in the bank, simply put it money into real estate, right? And actually safeguard that part. So that is my statement. And then of course the entire separate discussion is why not Dubai, why Oman? उसका भी we touched earlier कि your price point है that's significantly different. Of course, if you are in the lead, then it makes very little sense to go to Oman unless you expand your portfolio. Maybe Kelly and where else? So you can also go there. Or if you are, जो freelancers है वो maybe शायद दुबई में उस तरह से invest नहीं कर सकें. But then there's a lot of other, financial structures that you can tap into to enable investment in Dubai, for example. चार दोस्त मिलके पार्टनरशिप करके इन्वेस्ट कर ली, right? That's doable. So वो यही है ना, where there's a will, there's a way. But ये ना कि and the biggest advantage of not investing in Pakistan, unfortunately, is कि जी यहाँ पे you don't know whether everything is safe or not, right? आपने सब कुछ, even if Pakistan works in a perfect trajectory, the actual जो developer है उस पे question mark आ जाता है. There's no, you don't have any safeguard. No control, no regulator, no accountability, no assurity. Government is pretty much not involved in assisting in anything. सिर्फ पैसे खाने और कमाने में तो involved हैं. Absolutely. उसी में involved हैं बस. So this is my short and sweet summary of.
नो, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हुसैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सुपर ऑनेस्ट। आपने बहुत सारी चीजें टच की और आपने उन चीजों को अप्रिशिएट भी किया जो अच्छी थी ओमान की, और उन चीजों को आपने बड़ी क्रिटिक्स की नजर से देखा जो ऑब्वियसली जो चैलेंजेस हैं ओमान के, और फ्यूचर नोबडी नोज, बट किस तरह से ओमान आगे जा रहा है, क्या उनके प्लान्स हैं, उनको भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखा। सो थैंक यू सो मच आपके वक्त का, और बहुत बहुत शुक्रिया। और लेट्स सी, आपसे इंशाल्लाह फिर हम दोबारा कब मुलाकात करते हैं। श्योर, एनी टाइम। ठीक है, इस्लामाबाद, वेलकम। जरूर 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 जरूर, देखें कब 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 आना होता है। और आपका यूके का प्लान बने तो बताइएगा जरूर, खासकर अभी समर तो में आए तो समर में आइएगा प्लीज। अच्छा, विंटर जो है वो नॉट रिकमेंडेड है, इतना डिप्रेसिंग वेदर होता है विंटर में कि नॉट रिकमेंडेड। तो अगर बनाए प्लान तो समर का बनाइएगा। अच्छा, ओके, डन, इंशाल्लाह की। जबरदस्त। टेक केयर, थैंक यू सो मच हुसैन, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।